वेलकम अवलेश भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के साथ में। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है वेब एंगेज की। सो हम चाहेंगे कि आप बताओ कि क्या हार्डशिप देखी आपने, कैसे आपने मैन्यूवर करा इस पूरी 10 साल की जर्नी में। प्लीज शेयर योर इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स ऑफ दिस जर्नी। Thank you, Gagan, and thank you, Madhukar, for having me here. Very excited to do this, and hoping कि किसी के तो काम आ जाएगा. So let's just go through this. So 10 साल की journey, yes, you're right. Long time and lot of bittersweet memories so far. It started off with me and Ankit trying to build a very simple website engagement tool. That's how the name also comes, where the name comes from. And when I say website engagement, the first 4.5 years of our journey used to be about building a simple pop-up tool. आपकी वेबसाइट है, उस पे बहुत बहुत इजी तरीके से आपने वेब एंगेज इंटीग्रेट कर दिया, एंड यू स्टार्टेड थ्रोइंग पॉपअप्स ऑन योर वेबसाइट. We are talking about 2011 to 2015 वाला period, right? इंडिया में e-commerce boom भी था उस वक्त. And Ankit and I, we all have background in product, so we're generally very product first in our thinking, which also is bad. Sometimes we also sort of have very myopic view about things, even till date, that we try to overcome. But anyway, that's who we are, so you can't fundamentally change that. We started with this product. That was the time when Indian e-commerce was at its peak. A lot of capital went in, and everybody was just focused on doing more and more on the top line, right, which is more and more conversions. And WebEngage, we were just at the sweet spot, just in time, at the right moment. We got lapped up, right? So almost everybody, from a Flipkart to a Myntra to a Zabong or to a Snapdeal, whoever right at that time was a customer, और सब लोग यूज कर रहे थे. इनफैक्ट हमारे तो यूएस में आधे कस्टमर्स थे उस वक्त. वी हैड कंपनीज लाइक अ प्लूरल साइट, कंपनीज लाइक ग्रब हब, अवाया, सीमलेस, ऐसे बहुत सारे नाम. तो अब तो ये सब मर गए, बट ये सारे कस्टमर्स हुआ करते थे. And nobody actually knew that we were an Indian company. People outside of India, right? They had absolutely no clue. Zero customer support, zero sales. वो सब कुछ वही ऑनलाइन है, क्रेडिट कार्ड डालो शुरू हो जाओ टाइप्स. और प्रोडक्ट भी उसी तरीके से हमने बनाया था. गेटिंग अप एंड रनिंग वाज लाइक जस्ट अ पीस ऑफ केक. 4 साल ये हमने करा, गगन, मधुकर, एंड थोड़ा बहुत कैपिटल भी रेज किया उसमें. बड़े हॉट प्रॉपर्टी हुआ करते थे हम उस वक्त. एवरी वीसी यूज्ड टू लाइक अस, कॉन्ट्ररी टू व्हाट इट इज नाउ. तो बहुत प्यार मोहब्बत भी मिला, एंड थोड़े बहुत पैसे भी रेज करे. वी कुड हैव एक्चुअली. आपने फंड रेज कर लिया था? सॉरी गगन. फर्स्ट राउंड आपका चालू करने के कितने टाइम में रेज हो गया था? यार फर्स्ट तो अब राजन ने कर दिया था बहुत पहले. आई थिंक वी जस्ट हैड लाइक अ बेयर बोन्स प्रोडक्ट, और वो 2-4 जगह हमने डिप्लॉय करा था, वहां से बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे, तो राजन ने उसी पे पैसे डाल दिए थे. दिस वाज राजन एंड कपल ऑफ अदर गाइस फ्रॉम द इंडियन एंजल नेटवर्क. आई ओके। यूज्ड टू बी लाइक अ नेटवर्क ऑफ एंजल्स एट दैट टाइम, राइट? तो उसमें से हमने थोड़ा बहुत रेस कर लिया था. दिस इज 2012, सॉरी लेट 2011 ओनली, बहुत अर्ली. उसके बाद फिर जीटीआई से रेस किया. जब प्रोडक्ट थोड़ा ट्रैक्शन बिल्ड हुआ, थोड़ा रेवेन्यू शेवेन्यू आने लग गया, तो उनका इंटरेस्ट आया. एंड देन वी हैड लाइक कंपीटिंग टर्म शीट्स एट दैट टाइम, बट फाइनली डिसाइड टू गो अहेड विद जीटीआई. एंड उसके बाद ब्लूम ने थोड़ा बहुत डाला. तो ये कुल मिला करके, इन दैट फर्स्ट 4 years, 4.5 years, all we raised was about $2 million. थोड़ा सा डेट था उसके अलावा. And we got to like a peak ARR of 2.5 million at that time. Now this is, please understand that while all those numbers are very small, but this is a $3,000 ACV product being sold off the shelf, right? So नीचे कुछ कुछ ecosystem ही नहीं है. In 2015, we were a team of about 40-45 people, and doing $2.5 million of ARR, and with all this capital of $2 million, and we could have raised more. We had term sheets. Being the stupid founders that we have always been, we said no to those term sheets, and that's a separate story. उसकी बात बाद में करेंगे. But despite that, we could have raised more, which we decided not to, because एक problem जो fundamentally हम solve करने की कोशिश कर रहे थे, गगन and मधुकर, was the fact that you worked with us, you know how Ankit and I work. हम धंधा हमको नहीं दिख रहा था बड़ा. वो कैपिटल रेज कर लेते, कैपिटल बहुत एक्चुअली रेज कर सकते थे if we really wanted to, because we were a really hot property in SaaS property at that time. There was not much SaaS in that in that era. तो we could have raised more, but धंधा नहीं दिख रहा था यार, वो बड़ा धंधा नहीं दिख रहा था.
And that basically made me and Ankit think about what is it that will make me get these guys to pay more, the customers to pay more. अब फ्लिपकार्ट आ गया, जबोंग आ गया, मिंत्रा आ गया, स्नैपडील आ गया, सारे ही आ गए, तो अब और कौन बचा है और किसको बेचूं मैं? There's nobody else left too, right? So I will have to figure out a way to make money from these guys, more money from these guys. Flipkart at during peak at that time used to pay me like what, $8,000-9,000 a year. और वाह। फ्लिपकार्ट से मतलब बनाते थे पीक पे. तो अब फ्लिपकार्ट से पैसा नहीं बनेगा तो किससे बनेगा यार? मतलब देयर आर ओनली एज मेनी ऑफ देम, राइट? So that led to the birth of what you see now. That change, right? That decision to make that change, going through it, and then at the same time, sort of pivoting from what we had, which seemingly was working. उसमें बहुत इंटरेस्ट था, बहुत लोग पैसा डालने को भी तैयार थे, कस्टमर्स में भी इंटरेस्ट था, बिक रहा था, वो चल भी रहा था, राइट? बट दैट डिसीजन टू चेंज into a much more complex software, which is what we are now, and going through that journey was actually a very difficult phase in my life. ये हर फाउंडर की लाइफ, आई ब्लेसेड आर दोस फाउंडर्स हु डोंट हैव टू गो थ्रू इट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव दैट फेज. बहुत 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 मुश्किल होता है. आपको कन्विक्शन तो होता है, बट देन यू नीड सो मेनी अदर थिंग्स टू फॉल इन प्लेस, राइट, फॉर दैट टू वर्क. सो दैट पीरियड ऑफ 2015 टू 2016 मिड, राइट, 1.5 साल का पीरियड था. वो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट पीरियड था एज अ कंपनी. पुराने वाले कस्टमर्स को हमने सपोर्ट करना बंद कर दिया था बिकॉज इट टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट. इनिशियली हमने सोचा नहीं था क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर था. But keeping that product active, building its own product roadmap, and then trying to build something else on the side with its own GTM, in a resource crunch environment, that's a very difficult thing to do. So we decided not to. So, Avlesh, Yeah. I saw this similar stuff happening in sugar cosmetics also, right? So they had a product which was a services business, right? But the segment was same, right? Same segment. The ARPU was 400, 500 rupees, and from there they went on and said that we will basically launch a cosmetic product, right? And again, that was also almost a restart, right? Uh, So my question is that generally the easy way out is that if something is working, which was working for sugar cosmetics, Yeah. and I can basically give you example that sugar cosmetics did try to scale the fab bag model, right? And had they raised, some investor would have given a $5 million check in 2014-15, probably they would have scaled the fab bag and probably hit a ceiling much higher, and maybe that time the course correction would have not worked, right? And then the company would have not been where it is today, right? But 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 the important thing I wanted to understand is that Right. you were saying that you were also getting money, right? So so मजबूरी मजबूरी में तो मैंने देखा है लोगों को पिवट करते हुए, बट ऐसा क्या, व्हाट वाज द इनसाइट, हाउ वाज दैट इनसाइट कमिंग, और वो कहाँ से आ रहा था कि आप बोल रहे थे कि नहीं, मेरे पैसा तो आ रहा है लेकिन ये मेरा बिजनेस सही नहीं है, राइट? So एंड दिस इज अ वेरी वन 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 स्टेट कमेंट आई वांट टू मेक. The other comment which I wanted to make was on ये जो yeah. मतलब ये जो आप जब किसी चीज को, जब उसका आरपू बढ़ा रहे हो या एसीवी बढ़ा रहे हो या सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हो, जो भी आपका जो भी जिस तरह का प्रोडक्ट है, I have seen the reluctance of entrepreneurs is huge. Right? It's a huge reluctance, right? Nobody wants to basically increase the prices, right? हाँ, प्राइस इंक्रीज तब करते हैं जब 2021 या 2016 का माहौल आ जाता है, जब अब पता है कि प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे तो डिस्काउंट फंड नहीं कर सकते हैं, फंडिंग नहीं हो रही, बट दैट्स नॉट द राइट मोटिवेशन टू डू अ प्राइस इंक्रीज, बट टू एक्चुअली हैव दैट इंटेंट, क्यूरियोसिटी कि यार मेरा प्रोडक्ट का राइट प्राइस क्या है, राइट? मेरा प्रोडक्ट क्या बेस्ट प्रोडक्ट बन गया है, राइट? इज इट द राइट प्रोडक्ट? इज माय कस्टमर गोइंग टू गिव मी मोर मनी? Can I solve some more problems of investors, right? Sorry, investors नहीं, found customers, right? बट हमने देखा है कि जनरली लोग फीचर पे फीचर ऐड कर रहे होते हैं, राइट? और वो जैसे हमने लास्ट वीक में बताया था, कस्टमर को तो बहुत सारे फीचर नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए कि उसका एक कोई स्पेसिफिक पूरी तरह से सॉल्व हो जाए. तो how do you basically have this, how can other companies basically learn from you and say कि यार हमने उस समय ये दो चार चीजें देखी,
जिसके चलते हम लोगों को लगा कि हमारा सही सही प्रोडक्ट या अभी हमारा डिस्कवरी नहीं हुआ है, पीएमएफ नहीं हुआ है। हालांकि हमारा सेल्स हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ लार्ज मार्केट पीएमएफ। सो आई विल कीप लुकिंग एंड आई विल लुक फॉर समथिंग एल्स एंड आई विल डू दैट, राइट? So this advice would be very valuable for young entrepreneurs who are at seed, Series A stage, who have raised some capital and who believe that they have a PMF or nearing a PMF, but they might actually have similar problems like what you face, right? मतलब उसके indicators क्या है, right? वो insights क्या है, क्या किस चीज को देखते रहे कि because what you achieved, what you were able to do, even till now, 9 out of 10 people actually reach that stage, and from there they die down, right? And you were able to make way from there, right? So वो क्या indicators होंगे, कैसे देखना चाहिए इसमें entrepreneurs एक पॉइंट और है अवरेश, इफ यू कैन ऐड दैट, कि यार आप ये भी कर सकते थे कि आप पैसे लेते लोगों से और उसको ग्रो करते जाते हो, साथ में आप दूसरा बिजनेस जो आप करना चाह रहे थे नया करंट वेब एंगेज, आप तो दोनों रास्ते थे। एक तो मधुकर ने जो बोला कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया, ये डिफिकल्ट सिचुएशन को, मतलब जो कि मोस्ट फाउंडर्स डजंट लाइक ड्वेल ऑन इट, एंड आप दूसरा बात ये कि आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं पैसा रेस कर लेता हूँ, जो कहानी चल रही है उसको बेचता रहता हूँ, साथ में दूसरी कहानी भी फिगर आउट करूंगा। फेयर एनफ। वेरी लेजिट क्वेश्चंस यार, मधुकर एंड गगन, एंड आज जितने भी मैं आंसर दूंगा इनके, सब सारे हाइंडसाइट में ज्ञान होगा ये, और जो भी हीरो हम लगेंगे वो सब हाइंडसाइट में लगेंगे। जब ये हो रहा था हमारी लाइफ में तो हम जीरो ही थे। बट I'll share some nuggets of what was happening with us at that time, which influences this, and personally how sort of I steer these changes within the company, and then with the investor group. एक चीज to begin with, Gagan and Madhukar, I clearly want to state here, pivots are very difficult, very very difficult. Any founder who decides to sort of switch models, build something else, do something fundamentally different from what they originally started with, and you can go wrong with that all the time also. I think कोई वहाँ पे ऐसा silver bullet नहीं है, but pivots become insanely harder if the alignment across shareholder group has not been done before those pivots are attempted. Most founders, right, ये जो founder और investor बीच में ये जो mistrust होता है ना, ये generate यहीं से होता है, क्योंकि आप बिना confidence में लिए ये changes करते हो। आपने स्टोरी अपने इन्वेस्टर्स को बेची नहीं है ढंग से, और इट माइट बी अ मिसअलाइनमेंट, इट माइट बी दैट द इन्वेस्टर ग्रुप इटसेल्फ इज अ रॉन्ग ग्रुप, maybe they have a different way of functioning, right? Maybe the founder is just not sort of the right fit. So without getting into the details, what I see founders lacking a lot is not understanding this art of alignment. Everybody understands, things go wrong all the time. In your business it goes wrong all the time, in our business, every business, things go wrong all the time. बट आगे का जो फॉरवर्ड अप्रोच है उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। वो लोग बेचते नहीं है, वो लोग अलाइन नहीं करते, बहुत डरते हैं इससे, एंड स्पेशली अर्ली स्टेज फाउंडर्स, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, दे जनरली वेरी रिलक्टेंट अबाउट दिस इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्थ कमिंग अबाउट दिस। हो गई गलती, हो गई, अब कुछ करना है तो ठीक है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इसमें इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो होता ही रहता है, तो इट्स ओके टू से कि भैया आई फक्ड अप, एवरीबॉडी स्क्रूज अप ऑल द टाइम। सो वो नहीं कर पाना इज वेयर द फेलियर इज, मोर देन एनीथिंग एल्स. So to whoever is listening, as a founder here, my only piece of advice is just over communicate, guys, and go and talk to all your investors who materially matter, and get them on the same page. Maybe that they will have their apprehensions, maybe they'll agree, disagree, it does not matter. You still need to do your job. You still need to make sure that everybody is aligned, and the reason I'm overemphasizing this, Madhukar and Gagan, is if you do this right, downstream बहुत easy हो जाता है. Life is a lot more easier. You have one less thing to worry about, right? So coming back to the question, I'll tell you one of the key reasons why Ankit and I decided to pivot. Pop-ups जो है ना, वो थोड़े से, जो बाद में हमें रियलाइज हुआ, इट्स अ इट्स अ टूल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो स्नैपडील हमारा कस्टमर है, फ्लिपकार्ट हमारा कस्टमर है, उसकी मार्केटिंग को हमने टूल बेच दिया, राइट? नाउ व्हाट दे डूइंग इज रनिंग ऑल काइंड्स ऑफ फैंसी पॉपअप्स ऑन देयर वेबसाइट्स. आपने आपने कार्ट में ऐड प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट ऐड करा, खरीदा नहीं, पॉपअप आ गया. आप प्रोडक्ट व्यू करके देख के गए पिछली बार, अगली बार आए वही प्रोडक्ट का पॉपअप आ गया, राइट? सो while we had built a lot of these fancy things within that pop-up as a real estate, pop-up as a real estate
on a website was a relatively new thing at that time, because the marketing, बेचारा, those guys, they don't have any say on the actual real estate of the website. वो प्रोडक्ट पकड़ के बैठा होता है. तो उस मार्केटिंग को अगर कुछ कंट्रोल चाहिए होता है कि मेरे को एक कुछ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना है वेबसाइट पे, other than a few ad units here and there, the guy has absolutely no control. This actually gave them a lease of life. Oh, now I have something as an overlay. I don't need to go to my product guy and don't need to talk to any of them. मैं ओवरलेज में ही अपना गेम कर लूंगा, मेरे को तो यूजर से कम्युनिकेट करना है. Marketing actually saw that as a great bridge, and from a product standpoint, nobody credits this to us, but we actually did a phenomenal job of creating that as a separate inventory. I'll tell you why people didn't like us. The product guys, they absolutely hated us in these companies. Marketing guys loved us. The product guys, they hated us. क्यों करते थे? क्योंकि मार्केटिंग वाला जब ये चलने लगता था तो वो अब्यूज करना शुरू करता था. एक यूजर को एक सेशन में 10-15 पॉपअप दिखने लगते थे, रंग बिरंगे इधर उधर, सब अलग अलग कुछ कुछ हो रहा है. बिकॉज अब मार्केटिंग गाय बीइंग मार्केटिंग गाय, राइट? इफ समथिंग वर्क्स, they'll just abuse the system. We actually suffered a negative perception in the product community, who are the ultimate safeguards of gatekeepers of whatever goes onto their websites. There was a time in our journeys in all our large customers when marketing was actually taken to task and given were told to actually reduce the number of pop-ups that appear on the website. हमारे प्रोडक्ट में unfortunately the you understand this dilemma, right? You want more usage. How will I make more money if people use it more? But they can't use it more because the product and everybody else is absolutely up against them, right? They just cannot use me more. वो एक फंडामेंटल फ्लॉ था जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते थे. The only way we could have grown is go sell to more and more smaller customers, right? Number one. Number two, by the time we peaked, कुछ 5 से 10 टूल्स इंडिया में बिक रहे थे, just copycats, right? Fancy copycats. And there were 4 or 5 guys in the US that had come up by that time, selling exactly the same thing for a product which has a price point of $3,000 annually. These guys were cutting down on price. I was being forced by my customers to reduce price, which was already $3,000 at that time, because now there were cheaper alternatives available. A lot of this went into shaping that thought process, that it has to be sticky enough for somebody to actually decide to switch. There should be more at stake for them. That's how you build software stickiness. It should be hard to switch. And two, I need to make more money from this guy, and turns out that this guy is actually not going to use more because pop-ups are not good, right? Beyond a point, they're nuisance. So you don't want them to, their management or their product guys will never want them to use beyond a point. So our usage was cut down, stripped down, right? In these conversations, yeah, in these conversations that I was having with customers, the one thing that came up was, how do I make more money is how it started. And I was very clear about this in my customer conversations also. And what I learned by talking to them, Gagan, Madhukar, was that they thought of us as an in the moment conversion tool. वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आया, वो वेब एंगेज का काम नहीं है, वो लेकर आए. You paid your affiliates, you paid Google, Facebook, whoever else to bring traffic to the website. You've already paid that money. अब हम उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करने में एड कर रहे हैं, for sure. But if I wanted to go and command a Google-like premium for that conversion or a Facebook-like premium for that conversion, there is a strict no, because the economics doesn't work out. वो conversion के लिए तो already Google ने पैसे ले लिए, Facebook ने पैसे ले लिए, affiliate ने पैसे ले लिए. अब मैं वो उतना तो कमांड कर ही नहीं सकता. So, for all the conversion that was happening, Google was already taking credit. मैं बीच में आया तो मेरा बीच वाला ही credit है. They're not going to put me in the same league in terms of, conversions. That thought process itself led to the discovery of not just being an in the moment conversion tool, but also being able to bring users back to the website, which is where they were willing to put a premium.
क्योंकि ये यूजर है, ये खरीद के एक बार चला गया, या डाउनलोड करके मेरा ऐप एक बार चला गया, दोबारा कभी आया ही नहीं। उसको वापस लाते हैं और कन्वर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू है, वो आप ले सकते हो, उसमें 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 प्रीमियम है। दिस इनसाइट, it took a lot of, what I'm making it appear very simple on this conversation was not as simple. It took a lot of these conversations to happen, and us gleaning and putting it all together. But the change that we did was from changing ourselves from being an in the moment conversion tool to actually being a full stack solution, not just acting on people who are on the site at that time, but also playing a role in bringing them back. That's all there is. In summary, if you ask about the change, that's all there is. And this is not a fundamentally different from where we started. This is not कि पहले आम बेच रहे थे अभी इमली बेच रहे हैं. This is an extension of what we did. That's how it was. But it was a very tough extension because there was a whole evolution. What goes unnoticed, Gagan, and Madhukar, in pivots is when you do a pivot of this size and scale. अचानक से $3,000 का प्रोडक्ट अब वो 30,000 का सॉफ्टवेयर बन गया, $30,000 का सॉफ्टवेयर बन गया. You have to, yeah, then you have a very different GTM. The way you sell this product, service this product, it's all simple. It's not an off the shelf product anymore. उसको चलाने के लिए वीक्स वीक्स काम करना पड़ता है कस्टमर को, to actually get the product up and running. All of this, as I said, आज बहुत simple लगता है सुनने में. When you go through that transition, it's not simple. For a team that was doing customer support for a $3,000 product or customer service for a $3,000 product, servicing this is a very different ball game altogether. एक साल तक मैंने स्ट्रगल किया ओनली टू गेट द टीम्स अप टू स्पीड. देयर वाज फंडामेंटली नथिंग डिफरेंट इन द प्रोडक्ट और एनीथिंग एल्स दैट वी हैड गॉटन रॉन्ग. बिक नहीं रहा था हमारा प्रोडक्ट, जहां बेच रहे थे वहां चल नहीं रहा था. इट्स बिकॉज द सेल्स एंड सक्सेस teams and their approaches, they also had to evolve. They also had to go through a pivot. Those things are harder. When people go through that pivot, it seemingly seems like a product pivot or a business model pivot. It's not. एक्चुअली टीम्स के पिवट होते हैं और का पिवट होता है. ये सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है. अब ये हाइंडसाइट में मैं सब बोल रहा हूँ, बट ये द रीजन व्हाई इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी फॉर दैट एंटायर पीरियड वाज बिकॉज दीज थिंग्स वर नॉट अपेरेंटली क्लियर एट दैट टाइम. And you learn by making mistakes and figuring things out on the way, etc. Bring more talent, try to understand and learn from others, but all that is a very very long journey. In all of this, the intention of doing the pivot was only one: how do I make more money from the same guy? Because selling to every new guy is incrementally harder and harder, right? In the world of software, if you figure out a way to make more money from the same guy, nothing like it, right? And that's what led to the whole evolution of where we are in the software journey. Yeah. 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 Yeah, but Avlesh, if you look Sure, at sure. companies, say when you were doing your $3,000 product, right, and you had started, your base is low, right? So you can actually acquire 100, 200 customers every month, right? And funding भी हो रही है, so sales team भी थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, थोड़ा marketing कर दिया, Google, Facebook. Sure. You continue to grow 30%, 30, 35%, 40% month on month. VCs are very happy, right? Market तो theoretically लग ही रहा है कि $3,000 देने वाले तो मतलब there are enough people, right? Hmm. 30, 40,000 acquiring is difficult, but to say that there are not so many people is not correct, right? There are lots and lots of people, right? So उस समय मतलब हाउ डू यू स्टॉप योर सेल्फ एंड से कि यार नहीं लेना है 5 मिलियन, क्योंकि अगर 5 मिलियन ले लिया तो मेरे को पता है कि $3,000 वाला जो प्रोडक्ट है वो मैं 2,000 लोगों को तो बेच दूंगा, राइट? उसके आगे फिर इतना कस्टमर सपोर्ट होगा, इतना किचकिच होगा, इतना ऑपरेशंस हो जाएगा कि नहीं तो
अवलेश, तो अवलेश प्रॉब्लम हमको पता है, राइट? सो प्रॉब्लम आई थिंक यू ऑल्सो नो, प्रॉब्लम आई ऑल्सो नो, and I think there was something because of which you were able to come out of this problem, right? Now what I am looking for is that how you were able to navigate that, right? प्रॉब्लम मुझे पता है, देखो मुझे देखो देखो मुझे तो प्रॉब्लम पता है और मेरे बहुत सारे कंपनीज को मैं बताते भी रहता हूँ, बट उस प्रॉब्लम को जब तक आप खुद से इंटरनलाइज कर नहीं कर लो और अपने आंख से खुद नहीं देख लो, तब तक आप उससे बाहर निकल नहीं सकते हो, राइट? मैंने बहुत लोगों को अ, बताया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो हाउ डू यू बेसिकली, मतलब वो क्या, मतलब डू यू रिमेम्बर और डू यू हैव एनी, या बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने। मैं कोशिश करता हूँ। जो ये पहला क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है मधुकर, एंड अगेन मैं जो भी ज्ञान दूंगा आप सब कुछ हाइंडसाइट में ही है। नन ऑफ दिस इज वेरी अपेरेंटली क्लियर व्हेन यू आर इन दैट जर्नी, राइट? सो एवरीबडी हु फील्स that it's actually very hard, and but he actually feels very hard, it's very hard, and you know, there are too many unknowns. They're not wrong, होता है ऐसा, but you know, I'll quote my examples. ये जो आपने वर्ड यूज करा है ना, इनसाइट, बहुत अंडररेटेड है। जो जो मस्त फाउंडर्स होते हैं ना, दोज हु आई आल्सो कम अक्रॉस, द पीपल आई डीपली रिस्पेक्ट, आर पीपल हु हैव सम रियली रियली डीप इनसाइट दैट कट्स थ्रू नॉइज एंड क्लटर। ये फंड रेज, पैसा, बिलियन मिलियन, ये सब 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 अपनी जगह है। वो इनसाइट्स की वैल्यू प्राइसलेस है। रियल इनसाइट्स बहुत कम लोगों के पास होता है मधुकर, वो क्योंकि लोग उसमें टाइम ही स्पेंड नहीं करते। उस, you know, you have to be there. Either you have the advantage of coming from that domain. बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो जो इंडस्ट्री में 5-10 साल ऐसा बहुत घिस के कुछ करके फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अब मैं कुछ करूंगा इधर, क्योंकि मेरे को बात समझ में आ गई है, राइट? दोज फाउंडर्स कैरी दोज डीप इनसाइट्स, बट यू नो पीपल लाइक अस, हमें हमें क्या पता मार्केटिंग क्या करता था, हमको कुछ भी नहीं मालूम था हमें जब हम मार्केटिंग के लिए टूल बना रहे थे। हम you know, it seems very simple, right? Because you can create software. People like us, we have the luxury, we can create software. कोई बैठा बैठा कस्टमर सपोर्ट टूल बना देता है, उसने अपनी जिंदगी में कभी कस्टमर सपोर्ट करा है? उसको पता भी है कस्टमर सपोर्ट को चाहिए क्या होता है, बट चल जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। 75,000 कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, उनको देखो और अपना एक बना लो, और फिर अपना लॉन्च कर दो, प्राइस पे खेलो, जीटीएम पे खेलो, पैसा रेज करो, जीत जाओ। Easy. It's not hard. But those people, they never had an understanding of customer support. They never really knew उस आदमी को चाहिए क्या। अगर वो पता होगा ना मधुकर, तो वो लेजेंडरी कंपनी बनेगी, अलग दिखेगी। हो सकता है उतनी बड़ी ना हो, या हो सकता है बहुत बड़ी हो जाए, बट वो अलग तो दिखेगी, इसकी गारंटी। क्योंकि वो उन डीप इनसाइट्स की बहुत वैल्यू होती है। आप शुगर कोट करते हो, वेरी आई डीपली रिस्पेक्ट दोस फाउंडर्स। द रीजन व्हाई दीस पीपल आर एबल टू डू इट इज बिकॉज ऑफ दोस इनसाइट्स। उनको पता होता है, इतना टाइम खराब करा है उन्होंने उस स्पेस में, इतने सारे लोगों से गप्पे करी होगी, वो सारी चीजें पता है जो आपको और मुझे कभी पता ही नहीं चलेंगी। और यू नो, मैं आपको 50 चीजें बोलूंगा, आप मुझे बोलोगे, यू नो, पीपल कीप हियरिंग देयर इज नो डर्थ ऑफ ज्ञान दीज डेज, देयर इज इनफ अवेलेबल, बट नोइंग समथिंग ट्रूली एंड डीपली इज वेरी डिफरेंट। यू हैव टू गो थ्रू दैट। 1 साल तक मैं सिर्फ बातें कर रहा था मधुकर, प्रोडक्ट नहीं बना रहा था। मैं सिर्फ पिवट पे बातें कर रहा था, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम थिंकिंग राइट, जस्ट टू मेक श्योर कि हम जो ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं ये एक्चुअली कस्टमर भी टेस्टिफाई कर रहा है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, एंड एक ही मोटिवेशन था। दिस आंसर्स योर सेकंड क्वेश्चन मधुकर। The fact that you need to change course or do something else has to be driven by the founder's desire to build something large. Large क्या होता है? अब ये मैं नहीं सिखा सकता, या आप नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकता। वो फाउंडर को अपनी लार्ज को खुद डिफाइन करना पड़ेगा। कोई बोलता है 50 मिलियन का धंधा बनाऊंगा, 100 मिलियन का धंधा बनाऊंगा, कोई बोलता है यूनिकॉर्न बन जाऊंगा। सबका अपना अपना लार्ज है, सबके अपने अपने अलग मेट्रिक है, बट करने तो सब बड़ा ही आए हैं। अगर अगर हम इस इकोसिस्टम में खेल रहे हैं, मैं धंधा बना रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हम सबको बड़ा ही करना है। छोटा है वो किराना दुकान लगाने तो कोई आया नहीं है इधर। दैट अलाइनमेंट ऑफ व्हाट बड़ा is not often done. Most founders, they will not know how to get to. People will tell you मेरे को 100 मिलियन रेवेन्यू करने का है, मैं बना रहा हूं। कैसे पहुंचोगे 100 मिलियन पे? मैं कैसे पहुंचूंगा 100 मिलियन पे? यार, अगर मैं $3,000 का प्रोडक्ट बेचूंगा,
कहां से लाऊंगा मैं 40,000 50,000 कस्टमर्स? नहीं है। मैं कस्टमर सपोर्ट टूल नहीं हूं। मेरा मार्केट इन्फानाइट नहीं है। 50,000 कस्टमर को पॉपअप बेचना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उतने है ही नहीं। और I mean, in that world, changing, struggling with churn and all of that, right? All these SMB tools, they struggle. कैसा कैसा करेंगे वो बड़ा मुश्किल काम है। $30,000 का प्रोडक्ट बेचते हो आप, $35,000 का प्रोडक्ट बेचते हो आप। All you have to do to build a 100 million company is to find 1,500 2,000 customers, assuming you can do some upsells etc, right? 2,500 कस्टमर, चलो 2,500 कस्टमर आप, अगर आप कर सकते हो, अगर मैं कर सकता, मेरी औकात होती, तो मैं तो $100,000 का प्रोडक्ट बनाता। बहुत ईजी है यार, मेरे को 1,000 कस्टमर को बेचने का 100 मिलियन का धंधा बन जाएगा। काय को मैं इधर उधर ढूंढता फिरूंगा, बेचना इज सो हार्ड यार। सो इट्स डिफाइनिंग हाउ यू वांट टू गेट टू वेर यू वांट टू गेट टू is the part that is always missing. Pricing has to be worked backwards. मेरी कैटेगरी, यू गाइस आर अवेयर, ओवर क्राउडेड है, ओवर कैपिटलाइज्ड भी है, सारे कॉम्पिटिशन साहब ने भर भर के पैसा रेज कर रखा है, इंडिया में भी यूएस में भी। हम इन सबसे ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं आज भी, सेम कैटेगरी में। And there are all these competitors who will just they play on price. We don't fall for it. नहीं चाहिए हमको कस्टमर, वो हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि जो वैल्यू आप डिटरमिन करते हो ना मधुकर अपने प्रोडक्ट से, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग असेसमेंट नहीं होता। मैं अगर किसी से $30,000 लेता हूं, उस बंदे का उस बंदे का पहले साल में $300,000 का धंधा हमसे नहीं हुआ 10 टाइम्स, आई विल गो फर्स्ट एंड पुल द प्लग। इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट फॉर द कस्टमर। ये असेसमेंट ये असेसमेंट मिसिंग होता है। सो बेसिकली कहीं ऐसा था क्या कि यार किसी ने आपको ज्ञान दिया कि यार भाई अवलेश ये बिजनेस बंद हो जाएगा, आगे जाके फंस जाएगा, या फिर आपका जो पुराना एक्सपीरियंस था बर्ब का, उस लर्निंग से, मतलब यू आर सॉर्ट ऑफ अ रिपीट गाय, सो वाज देयर समथिंग व्हिच हेल्प्ड यू, मतलब पिक दिस थिंग, जैसे जो मधुकर कह रहे हैं ना, मतलब एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टू नो है कि यार आपको ये जो आपने जो कठोर बनने का डिसीजन लिया कि नहीं यार इसको हार्डशिप के थ्रू सॉल्व करता हूँ, इसको इजी वे से सॉल्व नहीं करता हूँ, या कैपिटल लेके, जो मैं आपको कहा कि यार आप फिर भी कर सकते थे, बट यू वेंट थ्रू हार्ड वे, वो क्या, और इज इट योर डीएनए, मतलब इज इट अ डीएनए, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, मतलब इज देयर समथिंग which help you do that? Let me answer this with the anecdote first, and then a very interesting anecdote. I'll not name the founder. Like all others, there are the good founder friends I look up to, generally go to for advice. This is one enterprise founder based out of Singapore, great guy, great friend also. मैंने उसको ऐसे ही चल रहा था हमारा कॉन्वर्सेशन, एंड अवलेश ये करेगा, मार्केट तेरा कितना बड़ा है, ये वो। बोला मार्केट तुम्हारा इन्फानाइट है। And I was too naive. I was too naive because every day you find new customers signing up. To some of them you can sell a $3,000 product, so you would want to believe कि ऐसे तो ये तो चलता ही रहेगा, ये खत्म थोड़ी होगा, ये बड़ा infinite pool है। And people are naive generally to think that way. सेम स्टोरी, राइट? 100 कस्टमर ऐड हो रहे हैं, 35% ग्रो हो रहा है, तो होता ही रहेगा, राइट? ये पूरी जिंदगी होता रहेगा। बट यू एंड आई वी हैव सीन इनफ टू नो कि ऐसा नहीं होता है। कोई पूरी जिंदगी 35% नहीं ग्रो करेगा मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर ऐसा होता है तो फिर तो गेम ही बदल जाता है, राइट? नोबडी डज। यू विल स्टार्ट प्लैटोइंग, एवरीबडी स्टार्ट्स प्लैटोइंग। द क्वेश्चन इज व्हेन। उसका रियल आंसर किसी के पास होता नहीं है। सो व्हेन आई वाज स्पीकिंग विद दिस फाउंडर, ही सेड ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इन्फानाइट मार्केट नहीं होता है, कुछ भी बकवास कर रहे हो तो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं बकवास कर रहा हूँ, आप बताओ आपका क्या मार्केट है। तो उसने बोला मेरा मार्केट मैं दिखाता हूँ तेरे को। उसने उसने 750 कंपनियों की लिस्ट खोली। दिस इज एन एंटरप्राइज फाउंडर, राइट? उसके पास एक एक्सेल है, उसमें 750 कंपनियों के नाम लिखे हैं। नाम, companies, the subsidiaries, wherever they are based, what is their turnover, etc. Like the typical, BDR exercise that you do, you name your prospects and your data, right? उसने बोला मेरा कस्टमर अवलेश यही 750 है, यही मेरा यूनिवर्स है। एंड ऑफ कोर्स टिकट साइजेस इज 250K to 500K, तो उनका गेम अलग है। बट he is not playing in an unknown territory. The point I'm trying to highlight is
ही इज आइडेंटिफाइड हु इज गोइंग टू सेल टू, उसने नाम लिख लिए। अब उसकी जिंदगी का गोल इन्हीं को सेल करना है। सेल्स टीम बनाता है, अलग अलग टीम्स हैं, उनको इसमें से की अकाउंट्स मिलते हैं, नेम्ड अकाउंट्स मिलते हैं, ये 5 तेरे, ये 5 तेरे, ये 50 तेरे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उनकी पूरी जिंदगी का गोल, ईच ऑफ दोज पीपल दैट रिवॉल्व्स अराउंड दोज अकाउंट्स। जाके बैठो उधर, जो करना है करो, बट यही तुम्हारी जिंदगी है, तुमको इसको फोड़ने का है। और अगर ये कस्टमर बन गया तो उसमें घुस जाओ उसके अंदर और फिगर आउट करो और क्या बेचना है उसको, और बेचते रहो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। That level of clarity, I'm not here to say this is right, that is right, people have different approaches, every GTM is very different, but that insane level of clarity on who my customer is just mind blowing. मेरे लिए बहुत enlightening था ये, actually बहुत enlightening था। For most companies including us, हवा में खेलते रहते हैं, वो पता ही नहीं होता, चल रहा है, 50 कस्टमर ऐड हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं, चलो होने दो, अगले महीने भी हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे, यूनिवर्स कहाँ है, वो 50 नहीं होंगे, वो कम हो जाएगा वो नंबर। इफ यू रियली न्यू द यूनिवर्स दैट यू आर डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट फॉर, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द B2C वर्ल्ड, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट प्योरली इन B2B प्रोडक्ट सिनेरियोस, ये यूनिवर्स को बहुत टाइटली डिफाइन करना defines everything else downstream. Your pricing, your GTM, your ability to service, the kind of team that you want to build, a lot of those things become a lot more clearer when you have a very good assessment of this. To your second question, Gagan, you're absolutely right. I think, at least in our case, it's all about the DNA. It's just who we are. हमको धंधा करना है, धंधा रेवेन्यू से आता है, कैश फ्लो से आता है, फंडिंग से नहीं आता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, राइट? And you have been a part of the journey to know this, enough about us. We've raised some capital, आगे जाकर के और रेज करेंगे, that'll never give me any happiness whatsoever. The only time I'll feel, we've done our job is when we get this to the revenue and cash flows that we want it to generate for all of us. धंधा तो वही है, वो क्लैरिटी सबके पास होती नहीं है, और उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। इफ यू डोंट हैव दैट वेरी स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियन अबाउट व्हाट अ रियल बिजनेस इज, यू विल गेट स्वेड। कोई आपको $10 million देगा, आप ले लोगे। मैंने पैसे नहीं लिए मधुकर, गगन, जब वो अवेलेबल थे, नॉट बिकॉज आई डेंट वांट टू, बट बिकॉज आई वाजंट श्योर इफ आई वाज इन द राइट डायरेक्शन। आई वाज बीइंग ऑनेस्ट। Today it may seem like stupid because others have gone ahead and raised more capital and are valued more, etc. Sure, बहुत अच्छी बात है. I feel good and happy for all of them. But I'll still be the same person. I'll still be dead honest about what I'm building. I still will only take money when I know I'll be able to deliver this back to you with all the returns that you expect. I don't want this to be a failed investment for you. I really never would want that to happen to anybody. वो वो बहुत अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। अब ये हर फाउंडर का अपना होता है, सबका अपना अपना है, और कोई सही गलत नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी लेंस टू जज, बट द रीजन व्हाई वी आर एबल टू परसिस्ट थ्रू सम ऑफ दीज डिसीजंस दैट वी टेक, मधुकर एंड गगन, इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल वी आर। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज के साथ सो करते हैं। अवलेश सो अवलेश, एक इसी में जस्ट फॉर कंप्लीटनेस पर्पसेस 2015-16 आपने पीरियड बताया व्हेन यू आर राइट, वर्किंग ऑन दिस पिवट थिंग, राइट? एंड यू गॉट दिस क्लैरिटी कि आपको पिवट करना है टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस, एंड इट टुक सम हार्ड टाइम फॉर यू टू फिगर आउट दैट पाथ, है ना? देन उसके बाद क्या हुआ? मतलब उसके बाद like you found this answer and you started selling, then उसके बाद you went to raise money, नहीं raise करा, या उसके बाद की जो जर्नी है, जस्ट जर्नी को कंप्लीट करते हैं, then we'll come back to some other questions, या, but इसको करेक्ट। थोड़ा हाईलाइट करिए। 2016 जुलाई में हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। आई मीन इट वाजंट एज फैंसी एज व्हाट इट इज नाउ, बट एक फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट कट हमने जुलाई 16 में लॉन्च करा था। एक सबसे अच्छी जो चीज हुई थी हमारे साथ, विच एक्चुअली बोल्स्टर्ड आवर कॉन्फिडेंस, वाज इवन बिफोर वी लॉन्च द प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट से कोल्ड कॉल आया था मेरे को। So customer conversation चल रहे थे. I started me being me, so I'll be super talkative about what we are coming up with and all that, right? So LinkedIn, Twitter चारों तरफ चालू था. And journeys was our USP. आज भी हमारा USP है. सबने कॉपी कर लिया हमसे, but nobody is even close to what we have built. वो continues to be our USP. Our, that we were the first ones to actually do it for a B2C tool.
We never get the credit for all this, but yes, we were the first ones. वो जब जो उन्होंने उनकी उनकी जो प्रोडक्ट टीम थी, दे सॉ इट एंड दे गिव मी अ कोल्ड कॉल, बिल्कुल रैंडम. That led to multiple conversations. Finally, me and Ankit, we visited. And that's when they opened up. Their entire team was sitting, product team, all product management, very senior folks. And they said कि यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने हमारा आइडिया चुराया कि हमने तुम्हारा चुराया. बिकॉज हम ये कर रहे थे एंड दे एक्चुअली बेयर्ड इट ऑल. दे शेयर्ड विद अस कि हम ये पूरी टीम बना के बारात बैठा के, वो कुणाल बोल के एक बंदा था, उसको हायर किया था उन्होंने, came from the US, and was tasked to actually build a journey like tool for Flipkart, conceptually very similar to what we were building, and they were just trying to sort of validate this. ये 2-3 महीने चला ये conversation. They decided to ditch their internal building efforts and use us instead, provided it came with the right commercials, etc. यार, funny thing, we actually sold them the product when we never had one. तो वो 1 महीना उन्होंने हमको मार मार के प्रोडक्ट बनवाया हमसे. बट दैट वाज अ ग्रेट वैलिडेशन कमिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट. आई हैड बीन सम स्मॉल गाय, इट वुडंट हैव मैटर्ड. बट फ्लिपकार्ट ने बोला कि हम यही बना रहे थे, हमारे लिए वो बहुत बड़ा वैलिडेशन था जब वो हुआ. 1-1.5 महीने तो उसमें ही निकल गए फ्लिपकार्ट को बस शांत रखने में, बिकॉज द प्रोडक्ट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल. We got it up and running, deployed it for Flipkart. But then the next difficult phase in the journey came. Gagan, to your question. 1 साल तक हालत खराब थी हमारी. बेसिक प्रोडक्ट था, नेचुरली इट हैज इट्स अ लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स. बहुत कुछ चल नहीं रहा था, बना रहे थे, तो वो तो डिफिकल्ट होता ही है. एंड आई स्टार्टेड सेलिंग बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ कैपिटल. आई डेंट हैव मनी. तो कस्टमर तो मेरे को चाहिए था, एंड आई वाज डेस्परेटली ट्राइंग टू सेल. बट हुएवर आई वाज ट्राइंग टू सेल, वेरी फार एंड फ्यू इन बिटवीन, हर जगह डिप्लॉय करने में हमारी हमारी बैंड बज रही थी. चल नहीं रहा था, कुछ फट रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. It was my lesson in actually focusing on internal org readiness before you go out and sell. कस्टमर को बेचा है, अगर कस्टमर खुश नहीं है, you can sell to as many as you can, it wouldn't make a difference. They're not going to stick around, and the exercise will go all in vain. पूरा 1 साल इन्वेस्ट किया उधर गगन, टीम कैपेबिलिटी बिल्ड करने में. आई गॉट एक्सटर्नल experts to come and train my people, to make them understand why this is different from pop-ups, to make them understand all these things are very easy, looking back, right? But it is not when you are in that journey. वो ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है. टीम ट्रेनिंग और इन सब चीजों में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है. वो 1 साल हमने बहुत किया. बट उस चक्कर में ये हुआ कि वाइल वी वर विनिंग कस्टमर्स, धीरे धीरे टीम स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही थी. But without capital, running a software business which is selling to mid market and enterprise is not an easy thing to do, right? Cash flows are always a challenge. बेचते आ जाओ, पैसा 3 महीने बाद आता है. All of that makes it very very hard. पूरा 4 साल, 2016 से 2000 early 2020, until the time you guys invested, was another exercise in just building more character in the company. Now, this was a time when, despite trying, it's not for the lack of trying, nobody invested in WebEngage, because we were the perceived laggards in the space. Everybody else seemed to have raised more capital, seemingly was ahead of us because they had raised more capital and were valued more. Nobody wanted to sort of, we literally became untouchables, right? But that also, in hindsight, actually helped build the company that all of us like today. Solid character, solid on fundamentals, and very focused on just customer happiness. Product, customer happiness. अच्छा product, अच्छा customer, बाकी सब हो जाएगा. ये हो नहीं पाता, गगन, if we had it easy in that journey. If we also had $10 at our disposal, we would have gone a different route. This would have been a different company in terms of how we think of our product, how we think of customers, etc. So I think that for last 4 years, 2016 से 2016 से 2020 का जो period था, was a lot of character building. And we went through a lot of problems during that journey also, right? You guys are aware of the incident around me that happened. None of that made the whole job easier. We had a couple of acquisition attempts.
initially I was reluctant to take those, but then there was no plan B. There was nothing else, right? Seemingly working to see this as a very large company, right? So it's not that we didn't engage with some of those. We did, but destiny had different plans. Those 4 years was actually the real org building that happened. जो कंपनी में होने चाहिए ना फंडामेंटल्स, कैश फ्लो कैसे होता है. मैं कैश कलेक्शन करता था यार उस टाइम पे. 1 तारीख की तनख्वाह कहाँ से जाएगी, वो लास्ट के महीने के 10 दिन पिछले वाले was all used to be me sitting on top of my invoicing and billing team. एंड मैं जा जा करके कैश कलेक्ट करता था लोगों से, because you have to pay your bills on one on the first of next month. These things, those, it may not seem the obvious use of a founder's time, but those engines that we built during that period are the ones that we thrive on today, right? Cash collections is a key performance metric in the company today, alongside 100 others that we track. It wouldn't have been if I had the luxury of capital, Gagan. I mean, why would you want to invest time in doing such a stupid thing when you could, do more on GTM and more on product and go and think of scale first? Thinking of scale before solving for all of this, in my view, is the wrong approach towards building business, especially a B2B software business, which is generally focused on mid market and enterprise, right? And that those 4 years, they gave me the luxury of time and all the hardships that came along with it, to actually focus on getting these right. आज वो हमारा ग्रोथ इंजन है. आज अगर चलता है, इफ यू रिमेंबर, कोविड आया, मैंने सबसे पहले एक चार्ट पब्लिश किया था, इससे हमारा क्या इम्पैक्ट होगा, हमारा कैश कलेक्शन क्या होगा. एवरीबडी वाज अ नेसेयर. आई प्रिडिक्टेड हमारे कैश फ्लोज कैसे इंपैक्ट होंगे, कहां तक जाएंगे. नोबडी बिलीव्ड इन मी. वी एक्चुअली डिलीवर्ड ऑन दोज नंबर्स. मैं ज्ञानी नहीं हूं. मेरे पास ये डेटा आता है क्योंकि ये डेटा हम ट्रैक करते हैं, क्योंकि हमें ये डेटा बहुत स्ट्रांगली पता है. वो जो डीप इनसाइट बोलता हूं ना मधुकर, ये डीप इनसाइट से बहुत बहुत अंदर घुसे हुए हैं. बहुत चीजें बहुत डिफरेंटली पता है. मैं जब कोई नंबर बोलता हूँ, बोर्ड बोर्ड कॉन्वर्सेशंस में भी मैं एक नंबर बोलता हूँ. इफ आई से समथिंग, one, I won't say anything which I don't believe in. So If I say something, that means I've done my one thing is homework commendable कि यार and I've done a generally lot I've of work observed before I कि publish that to you. about collection or about revenue projection 2 to 5% accuracy से ना you are able to give this data even in the downturn time also. So I think the process. It's not me. It's not me, Gagan. It's all these processes that we've built in place. Yes, the engine works, but वो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. ये 100 मिलियन अभी रेस करा, 500 का कल रेस करेंगे, उसमें उसके लिए टाइम ही नहीं होता. आप उन सब चीजों में इन्वेस्ट करोगे नहीं. वो 5 साल बाद आएंगे. वो आप 5 साल बाद सॉल्व करोगे, which is still okay. It doesn't matter. नहीं अवलेश, सिर्फ ये इन्वेस्ट करने की बात नहीं होती. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए का फर्क होता है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, राइट? एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ये नहीं पता हो कि उनके बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, और उनके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, और उनका सेल्स का पाइपलाइन कैसे चल रहा है, राइट, तो वो सो नहीं सकते हैं. दे कांट स्लीप, राइट? And Right. while these people might trust everyone, but still they want to see data because data is the only thing they trust entirely, right? And then there are people who would basically say कि यार ठीक है, सामने वाले ने बोला है ना तो हो जाएगा, राइट? एंड दे जस्ट, दे डोंट रियली विल गो इनटू द लेयर्स ऑफ डेटा, एंड दे विल अग्री, राइट? इस बात मेरे को याद आता है, आज से 12-13 साल पहले जब मैं अपने पुराने अवतार में आविष्कार में काम करता था, हमारी एक कंपनी थी. Hmm. उस that company was not doing well and there was a hired CEO. So hired Yes. CEO आके हमको बताता था कि उसका सेल्स टीम आती थी, बैठती थी और बोलती थी कि हमारा इतना बड़ा पाइपलाइन है. Hmm. 5 करोड़ का पाइपलाइन है नेक्स्ट क्वार्टर का, ठीक है. एंड आई वाज वेरी न्यू इन दिस होल बिजनेस. आई प्रायर टू दैट आई वाज एक्चुअली वर्किंग इन अ नॉन प्रॉफिट, तो मुझे पता भी नहीं था. Yeah. तो मैं बोलता हाँ यार, बोल रहा है 5 करोड़ बोल रहा है क्वार्टर में, चलो मान लो कुछ नहीं होगा तो अगर 30% भी हुआ था तो 1.5 करोड़ भी क्या बुरा है, राइट? लास्ट क्वार्टर में तो 25 ही लाख Hmm. हुआ था, राइट? Hmm. बट देन एज वेंट अलोंग, राइट, एंड एज समय का मार खा खा के समझ में आया कि यू हैव टू बेसिकली ग्रिल डाउन एंड डिटेल कि मतलब
तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि 5 करोड़ होगा, राइट? एंड देन वंस यू स्टार्ट डिटेलिंग, सो ये बेसिकली एक तरह का डीएनए बन जाता है. Or there are people who do this. So therefore, your prediction accuracy is because you have that curiosity and your desire to be on top of things. And you are rightly correct that when the business is very small, you can have that accuracy by being working hard, right? Right. But अगर आपकी बिजनेस बड़ी होती जाएगी, तो अगर आप systems and processes place पे नहीं डालोगे, तो आपके पास वो नंबर नहीं रहेगा, right? So you will feel uncomfortable about it. Yep, I agree with you. I can't agree more. And I it's think it's very DNA linked also, as you said. Yeah, you're right. I think it's a great conversation, Avlesh. I think we wanted to talk about other things also, but I think this is already a very long one. I think it's very very बहुत ही अच्छा conversation इसलिए है क्योंकि generally out of 10 people who are celebrated, 8 of them are celebrated for growth, right? And mindless growth, and I also fund and I also push my companies to do the same. But then there are some companies, some founders who build it in a very different way, right? And uh, I have been a witness to one of them getting built in the IQ portfolio, and I think Agan is seeing the other one getting built right in front in right in front as web engage. But ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी होता है. बट मेरा कॉशन, मेरा बेस्ट ऑफ लक है. और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा बनाना ही है, राइट? मतलब वो चीज तो सो तो अप्रोच इधर से करो एंड नथिंग इज राइट और रॉन्ग. बट या सो दिस इज बट बट इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, Avlesh. And Gagan, you have any closing comments? Then we can finish. या क्लोजिंग क्लोजिंग कमेंट नहीं है, बट एक सवाल है, एक और लास्ट सवाल कि यार, यार ये मोटिवेशन कैसे आता है, मतलब इस चीज को करने के लिए, मतलब बिना कैपिटल के कंस्ट्रेंट में, मतलब व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि यार ये कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ और मतलब लड़ता रहूँ पूरी दुनिया से? और आपने तो मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस देखे हैं, तो मतलब व्हाट ड्राइव्स यू यार, मतलब व्हेन सक्सेस भी नहीं आ रहा ना, तो कैसे ड्राइव ड्राइव ड्रिवन होते हो मतलब? गगन, मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब मेरे को मोटिवेशन चाहिए था लाइफ में. The best way to lead a life or sort of face all these challenges in life is to not have the need for motivation. That's how I think. Not everybody thinks the same way. सबको चाहिए होता है, and I think it's fair. um, कुछ आई डोंट नो गगन, आई डोंट नो एनी बेटर. मुझे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार, यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू सेल, बेच देना चाहिए था. एंड could have done another gig. You would have been a hot property, people would have given you money, you would have made something bigger, larger. uh, and they're right about it. But here is why I am at this, and I will continue to be at this, Gagan, is because I don't think the company and the product has found its rightful place. मुझे पता है ये क्या है. That is unshakable determination, and it comes from all the work that I've done for 10 years, and 5 years before that working for other companies. I know what I'm doing. I know what this is worth. And my worth is not determined by venture capital and somebody putting value. I know what I'm building. I'm very confident of it, Gagan. Very, very confident of it. It's that innate desire to get this to that drives me. फंड रेज हो नहीं हो, तो बेसिकली एम्प्लॉय आया पहाड़ पे चला चढ़ने का गया, जो ड्राइव होता है कि ये यार तो चलता लास्ट रहता है. एंड पॉइंट तक पहुंचना, दैट इज ड्राइविंग यू कि यार मुझे, हाँ मुझे समिट पे जाना है। मुझे समिट पे पहुंचना है. हाँ, मुझे समिट पे पहुंचना है. हाँ जी, मुझे पता है ये क्या है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. तो मैं बेवकूफ हूँ अगर मैं इसको वहां तक नहीं ले जाऊंगा. आई नीड दिस कंपनी टू गेट इट्स राइटफुल प्लेस. आई नो व्हाट दैट इज. इट हैज टू गेट देयर. अंटिल दैट टाइम आई एम नॉट रेस्टिंग. एंड सॉफ्टवेयर बनाना, बेचना, ये तो यही तो मेरा काम है, ये तो मेरी जिंदगी है. मैं अभी भी कर लूंगा, आज 10 साल बाद भी कर लूंगा, जिंदगी रही तो 50 साल बाद भी करूंगा. करता तो मैं यही हूँ. दिस इज ऑल आई नो. So I know what I'm doing. I'm pretty confident of the space. I wouldn't have invested 10 years of my life if I didn't know what I was doing. मैं ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. आई कांट हैव दीज इयर्स बैक, राइट?
So if I have done it, I would rather see it through. I'm not gonna hang my boots ऐसे नहीं हो पा रहा है, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, पता ही है कर रहे हैं, ठीक है, वो चैलेंजेस हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो तो साइकिल्स हैं, चलता रहता है। आज भी ऐसा एज इफ एवरीथिंग इज स्मूथ टुडे, दिन भर फायर फाइटिंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ नौटंकी मची रहती है हर जगह पे। बट वो तो करना ही है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। आई साइंड अप फॉर दिस, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस आई न्यू आई साइंड अप, आई कांट कंप्लेन, आई कांट गो बैक। So no, to your question, I don't need any motivation whatsoever. I know what I'm doing, and I'll take this company there. I'm pretty confident and determined that I'll take it नहीं, there. आई थिंक बहुत अच्छा लगा अवधेश आपसे बात करके एंड मतलब सुन के आपकी जर्नी वापस से और डिटेल में, एंड आई थिंक I can get it. I think finding a meaning in life is something very important, and I think you have found this web engage as a meaning of your life, and I think in my words at least that is driving you to like uh, like manage all these challenges and hardship which you have seen so far, and wish you all the best. Very excited to be part of this Great journey and thing. learn more from you. Thank you, sir. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. Thank you so much. Great conversation, and all the best, everybody.